Question number 86 says kinetic energy of the body is given, it is what, 4 joules, and its moment of inertia is given 2. The angular momentum, means L. So you know what is the formula of kinetic energy in terms of L. So kinetic energy, it is equal to how much? L square divided by 2I, na? याद है कि नहीं? Right? So use this formula and get the value. So kinetic energy, it is 4. 4, it is equal to L square divided by 2 into I value, it is what, 2. So what L value will be equal to 4. So option will be D. Right? Yes or no? Yes. So Yes, sir. 86 का option, it is D. Okay. Next is 87. 87 क्या कहता है? Moment of inertia of a ring about an axis passing towards center perpendicular to its plane is I. So suppose the moment of inertia of a ring, okay, ring it is given. So this is the first case, this is what I, and you know for ring it is mr square. Okay. It is rotating with the angular velocity omega. So this is what rotating, suppose in anti-clockwise direction with the angular velocity omega. Another identical ring. So दूसरा ring है same specification का. Is gently placed on it so that their centers coincide. तो second case में दो ring consider करो आप, right? तो दो ring consider करोगे तो दो moment of inertia आएगा. I dash जो रहेगा that will be equal to 2I. Okay, and there will be new angular this velocity omega. So that if both the rings are rotating about the same axis, then loss in the kinetic energy is. So loss in the kinetic energy is to be calculated. Okay. So the new angular velocity, it will be suppose omega dash. Okay. Omega dash and I dash is the new angular velocity and moment of inertia. So according to law of conservation of angular momentum, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. तो पहले वाले केस में I omega it is equal to I dash omega dash, right? So this is what I dash का value अपने को पता है. I dash का value it is what 2I suppose. So 2I, this is what omega dash. So I omega. So I will get cancelled. Omega dash will be equal to omega by 2, right? Now what is the change in kinetic energy? Kinetic energy final minus kinetic energy initial. So they are rotating, so it will be having rotational kinetic energy. So rotational kinetic energy means half I finally I dash omega dash square, okay, minus half I omega square. So this will be half. What is the value of I dash? I dash it is equal to 2I. Omega dash will be omega divided by 2 the whole square minus half I omega square. So suppose I consider I omega square outside. So क्या मिलेगा? 2 will get cancelled. यहाँ पे आएगा 1/4 minus half. So 1/4 minus half. So multiplied by 2 multiplied by 2. So this will be how much? I omega square divided by 4. Okay, minus 1/4. So that will be option B. Minus sign आया because the kinetic energy there is a loss, right? So वहाँ पे question में लिखा है then how much is the loss in kinetic energy? So loss is always negative, right? So option B is correct, right? Yeah. ये नोट कर लो. Complete it. Yes. Yes. Okay. Next is 88. What is 88? A thin circular ring. A thin circular ring is there. Mass is capital M, radius is small r. Is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. 4 objects then, each of mass small m now, are gently kept to the opposite ends of the two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be. So what will be the new angular velocity? Okay. So first case, यहाँ पर भी अभी दो cases है.
So what is case 1? Case 1 is a thin circular ring of mass capital M. So this is what a ring of mass capital M. The radius it is what small r is rotating about its axis with angular velocity omega. So this is what angular velocity omega is the moment of inertia. Suppose I. So if we know that this I value is equal to mr square, right? And the first case angular momentum it will be I into omega. Okay. Case 2. What is case 2? Case 2 में 4 objects each of mass small m. So again the same ring is there, capital M and small r is the radius. Now 4 masses. So these are the 4 small masses, small m. Okay, they are kept at the along the diameter, perpendicular diameter, such that the diameters are perpendicular. This diameter, this line are perpendicular. So this is what m and m. Okay. So what is the new moment of inertia now? The new moment of inertia, suppose it is what? I dash. So I dash will be equal to what? The first moment of inertia I plus इसके moment of inertia respective. तो कितने हैं ये 4 m r square, right now 4 m r square, small m. So what is this I value? I value it is equal to m r square. Okay. So m r square it is equal to 4 or plus 4 m r square. So what you can take outside is r square only. Capital M plus 4m. This is the value of I dash. Okay. What we want to get is the new angular velocity. Now the new angular velocity, suppose it is what? Omega dash. So according to law of conservation of angular momentum, I omega it is equal to I dash omega dash. Okay. So use that, use this formula and get the value. सर का नेटवर्क थोड़ा स्लो है. सपोर्ट कैसा आ गया आज? अच्छा आ गया ये. कैसे चल रहा बाकी लेक्चर्स? हाँ हमारी सच में बहुत ही है, मतलब कौन सा बाकी कौन सा सब्जेक्ट है? मेरे को अभी कैसा है कि दूसरे अलग ही सब्जेक्ट ले रहे हैं. मुझे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा अलग ही फील्ड का ही है. लेकिन हम तो अचानक कैसे वो क्या बोला तू अचानक कैसे, मतलब तूने उसके पहले कभी ये नहीं किया था ना वो सब? अनिरुद्ध क्या बातें चल रही है भाई? सर आपका आप फ्रीज हो गए थे, आप बीच में फ्रीज हो गए थे. नेटवर्क स्लो है थोड़ा आपका. आपको मेरी आवाज सुनाई तो दे रही थी ना? नहीं नहीं कुछ नहीं सर, आप कुछ नहीं. फ्रीज भी गए, आप भी गए. अच्छा, मुझे आपकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी. ठीक है. कंप्लीटली. तो देख लो, आंसर आ गया है. ब्लर दिख रहा है बुक. हाँ बुक ब्लर भी दिख रहा है. ठीक है, मैं देख के आता हूँ नेट का स्पीड. सबके मोबाइल में नेट बंद करके आता हूँ. अन्नी शांत बैठ सर है. अरे हाँ मैं पर चैट बॉक्स बंद क्यों किया? अरे कुछ लोगों के वजह से. शांत बैठ अभी. अरे यार तू नहीं आया ना इसलिए. अब मेरा रीजन मत ले. ओके, क्लियर है थोड़ा बहुत? हाँ सर.
पर भी ब्लर है थोड़ा सा. आया आंसर आया? हाँ सर. Yes. Okay, next. 89. Bob of mass small m attached to an inextensible string of length small l is suspended from a vertical support. The bob executes in a horizontal circle with an angular velocity omega about the point of suspension. So this is what a conical pendulum, right? So in a conical pendulum, what remains constant? Which of the following thing is correct in a conical pendulum? सी रहेगा शायद. Angular momentum change. So angular momentum के ऊपर ये सब कुछ, right? So angular momentum, it is given by formula L is equal to mvr, right? Yes. So what it is the cross product between r bar and p bar. So r bar cross p bar, it is equal to L bar. Okay. The next thing is so you are telling it should be C. तो Yes, sir. C क्यों रहना चाहिए आपके हिसाब से? सर क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है हमेशा, लेकिन जो वेलोसिटी रहता है वो सर्कल में घूम रहा है ना, तो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना, इसलिए मैंने वो सोच के आपको आंसर दिया. नहीं, इट सपोज सर्कल जब भी हम बनाते हैं तो जब जो डायरेक्शन ओमेगा का रहता है ना, वही डायरेक्शन एल का भी रहता है. सो इट इज व्हाट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके ओके सॉरी. तो इट्स डायरेक्शन, इट इज व्हाट सेम, इट इज नॉट चेंजिंग. सो डायरेक्शन रिमेन्स सेम थ्रूआउट. सो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या है आंसर पीछे? कहाँ? So C है. सी है. एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड. हाँ. Mass attached to an inextricable string of length by 600. About the point of suspension. Okay, so this is what the conical pendulum, suppose you got a conical pendulum. So velocity direction, it is tangent to the circle, right? And a radius vector, it is like this. This is what a radius vector, r bar. So what will be the angular momentum? Angular momentum, it is what L bar. So L bar ka direction, it will be perpendicular to this along the length. Okay, along the length, it is what L bar direction. So this is what L bar direction. Okay, so जब भी ये bob move होगा like this, okay, in this conical pendulum, जब भी ये bob will perform circular motion, then this L bar direction, it will change like this. So this is the concept of conical pendulum, right? Now, getting or not?
So L bar will be same in magnitude, but it will change in direction. Yes, yes. समझा? तो in a pure rotational motion or circular motion, the L bar value, it is what constant with respect to magnitude as well as direction. Okay. लेकिन जब भी conical pendulum की बात करें तो conical pendulum में the bob it is moving in circular motion. So along the length it is what L bar. So L bar it is also changing its direction with respect to force. Okay. So the angular momentum changes in direction but not in magnitude. Option C is correct. Next is 90. What is 90? Thin circular uniform circular disc of mass capital M and radius capital R is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. Another disc of same thickness and radius but mass it is 1/8 is placed gently on the first disc coaxially. The angular velocity of the system now is. So again, this is what the angular momentum concept, the law of conservation of angular momentum. Okay, this is solve karo. Solve this. What is angular momentum concept? This first case, you consider first and second case. Okay, so case one, what is case one? A thin uniform circular disc of mass capital M and radius capital R is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center perpendicular to its plane. So a disc is there, it is passing through an axis to its center perpendicular to its plane. This is what I and this is what omega. Okay. So what is this I value here for uniform circular disc? It will be mr square divided by 2. Mr square divided by 2. What is case 2? The case 2 it is, this is suppose the same horizontal circular disc. This I value was equal to mr square by 2. Now another disc of same thickness but radius but mass it is what 1/8. So there are two circular disc now. So this will be added with the new one. So the new one it is the mass it is 1/8. So m divided by 8 r square multiplied by 2. This is the final moment of inertia. So this suppose omega dash. So what we want to get is omega dash. So I1 omega it is equal to I dash omega dash. This is what second case I dash. So m r square divided by 2 omega it is equal to what is the value of I dash multiplied by 8. This will be 16 and this will be 9 mr square plus multiplied by omega dash. So what we want to get is omega dash. क्या आएगा आंसर? mr square will get cancelled. This will be 8. So omega dash will be 8 by 9. 8 by 9. 8 by 9 omega. Omega. Right? 8 by 9 omega option है. आ गया सबको? हाँ. स्क्रीनशॉट लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना लिखो. Done? Yes. Next is 91st. A disk of moment of inertia I1 is rotating in a horizontal plane, okay, about an axis passing through its center perpendicular to its plane with an angular angular speed omega 1.
So again a disk is there. This is what I1. The rotation speed it is what omega 1. So you know this is what mr square by 2 I1 value. But we don't want mr square by 2 because the option ABCD is not, it is with respect to I1 and I2. Now another disk of moment of inertia I2 having zero angular speed is placed coaxially on the rotating disk. So this is what case 1. So in case 1 what we have is I1 omega 1, it is what L1 value. What is there in case 2 now? Another disk. Another disk of moment of inertia I2 having zero angular speed is placed coaxially on a rotating disk. Now both the disks are rotating with the constant angular speed omega 2. The energy lost in the initial rotating disk is okay. So again the loss in kinetic energy is to be calculated. So हमने calculate किया फिर से calculate करो ये वाले so what is the I dash value it is equal to पहले तो I1 था अभी I1 plus I2 हो जाएगा right and the new angular speed it is what omega 2. Now ABCD में आप देखोगे तो ओमेगा 2 नहीं है so ओमेगा 2 को आपको वैल्यू फाइंड करना ओमेगा 2 का आपको so according to law of conservation of energy this L1 it is equal to L2 which is nothing but I1 omega 1 और दूसरे वाले केस में क्या है I dash omega 2 I dash it is what I1 plus I2 into omega 2. So what is the value of omega 2? It is what I1 divided by I1 plus I2 into omega 1 right. So loss in kinetic energy it is nothing but kinetic energy final minus kinetic energy initial. So kinetic energy final half finally it is what I1 omega 1 square final sorry. So half I dash omega 2 square minus half I 1 omega 1 square. Okay. So what this value is equal to half what is I dash I1 plus I2 into omega 2 square minus half I1 omega 1 square. What you can write omega 2 is equal to this value omega 2 is equal to okay. So क्या आएगा यहाँ पे this would be the change in kinetic energy it is equal to half I1 plus I2. What is the value of omega 2? I1 divided by I1 plus I2 the whole square into omega 1 square minus half into I1 omega 1 square. So one of the I1 plus I2 value will get cancelled. So what you can take outside is half I1 you can take outside. You can take omega 1 square outside. So what remain inside is I1 divided by I1 plus I2. Okay. किसी को मिला आंसर ये वे से सर ऑप्शन डी है क्या? आपको मिल गया आंसर? I2 में हमने मिस्टेक की है ना ठीक I2 में कहीं तो मिस्टेक की है सर आपका बुक थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बीच में वो नेट स्पीड के ऊपर और है बीच में फ्रीज भी हो रहा है
यस क्रिस्टोफर, मिला आंसर आपको? डी ऑप्शन है ना? सर हाँ, ऑप्शन डी आ रहा है। यहाँ पे क्या मिस्टेक की है हमने फिर बताओ? सर आपका नहीं रहा है। सबको डी ऑप्शन आया क्या? अमन, डी ऑप्शन आया आपको? कर रहा हूँ आप सर। अच्छा करो। अनिरुद्ध, डी ऑप्शन आया? नहीं नहीं आया। सर सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ वन I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसा क्या है ना? नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जी हाँ। उसके बाद में हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई डैश ओमेगा टू स्क्वायर माइनस हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर ऐसे किया। फिर आई डैश का वैल्यू लिखा आई वन प्लस आई टू ओमेगा टू स्क्वायर माइनस हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर ऐसा। फिर इसको सॉल्व किया, ओमेगा टू का वैल्यू लिखा। ओमेगा टू का वैल्यू क्या रहेगा? आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई वन प्लस I1 ओमेगा वन, हाँ I1 ओमेगा वन अपॉन I1 प्लस I2। और फाइनल आएगा फिर हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा टू स्क्वायर। नहीं, ऑप्शन डी देखो क्या है, हाफ आई वन आई टू सर डी डिवाइडेड बाय आया, आई वन प्लस आई टू। वही मैं बताना डी आ चाहता हूँ रहा। यार। किसको है? डी अनिरुद्ध को? थैंक यू हो रहा है। हाँ क्या मिस्टेक की है यहाँ पे अनिरुद्ध सर? सर अभी वो तो एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन तो भी एक सेकंड रुको, देख रहा हूँ मैं। सर आपका फ्रीज हो रहा है बीच में। ठीक है रे, अभी थोड़ा अभी नेटवर्क, सर क्या करेंगे उसमें? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाँ, हाफ I1 प्लस I2 I1 बाय माइनस स्क्वायर। धनश्री आपको आया? नहीं। सर हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर माइनस हाफ I1 स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर अपॉन 2 I1 प्लस। सर आपने जो किया है ना, हम्म, मेरे को ये आया था हाफ I1 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 द होल स्क्वायर इनटू ओमेगा वन स्क्वायर माइनस हाफ I1 ओमेगा वन स्क्वायर। उसमें से एक हाँ वो स्क्वायर कट हो गया। उसके बाद फाइनली आया हाफ I1 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा वन स्क्वायर माइनस हाफ I1 ओमेगा वन स्क्वायर। उसमें से फिर मैंने कॉमन निकाला तो आ गया। मुझे नेक्स्ट वाले इसमें आई टू नहीं आ रहा ना, यहाँ पे आई टू आना चाहिए। हाँ तो सर अभी आप कॉमन निकालोगे ना तो फिर वो मतलब I1 ब्रैकेट में क्या आएगा, I1 अपॉन I1 प्लस I2 माइनस वन। तो उसके बाद फिर वो कट हो जाएगा। अच्छा, माइनस वन नहीं लिखा, बराबर बराबर बराबर, ओके हाँ ओके। तो इसको कॉमन लेने के बाद में माइनस वन आएगा, दिस विल बी माइनस वन एंड दिस विल बी हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर एंड दिस विल बी वन माइनस आई टू डिवाइडेड बाय हाँ I1 plus I2. So minus sign यस आ रहा है, that means there is a loss in the kinetic energy. Okay, या this will be minus half omega 1 square I1 I2 divided by I1 plus I1 I2. प्लस I2 हाँ। Okay, so this is the answer. Okay, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 92 और 93 करो मैं जरा 2 मिनट।
ओके 92 सोचा किसी ने? A rod PQ of mass m, length is capital L. It is hinge at end P. It is hinge at end P. इसका मतलब it is fixed. Okay, end P से वो rotate हो सकता है. That means the moment of inertia which is passing to the one of the end of the rod. Okay, so moment of inertia क्या रहेगा उसका? I will be equal to ml square divided by 3. ये use करना. Okay, moment of inertia. The rod is kept horizontally by a massless string tied at Q, suppose, as shown in the figure. When the string is cut, so initial angular acceleration alpha of the rod is, so alpha find करना alpha. अभी ये रॉड का मास कितना रहेगा? रॉड मास विल बी सपोज कैपिटल M. ओके, तो जब भी ये नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, तो how much will be the force? It will be the weight of the rod. Okay, the weight of the rod will be what? W it is equal to mg, right? So W it is equal to mg. और ये weight कब कहाँ पे act होगा? It will be acting at L by 2 distance, right now? It will be at L by 2 distance. So what will be torque? Tau is equal to force multiplied by perpendicular distance. First formula, right? And the next formula is what? Tau is equal to I alpha. There are two formulas. Okay, tau it is equal to force multiplied by perpendicular distance. The next formula is what? Tau it is equal to I alpha. So force into perpendicular distance. Force मतलब क्या? mg. Perpendicular distance कितना? L by 2. So this will be equal to tau it is equal to I. I value is what? ml square divided by 3 into alpha. Okay, so mm will get cancelled, L will get cancelled. One of the L will get cancelled, and alpha value will be equal to 3g divided by 2. Right? That is option A. Option A. Right. So this is option A. Yes, understood this. हो गया लिख के? Yes, Ganeshan, done? एक मिनट रुको सर. Yes. आनंद में वो लड़का है, वो आनंद से कभी आएगा तभी उसको दीजिएगा, उसको देखने वाला सुन उनका क्वेश्चन को बोलना सर मेरा ऐसा प्रॉब्लम था आई भी नहीं
कंप्लीट हो गया आप सबका? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करो।